board, Maths 1, Standard 9, Lesson number 1, Sets. I hope I'm audible. So I'm going to start with practice set 1. I'll try to finish and cover maximum practice sets today within 1 hour. So we are going to start with practice set 1.1. This is on textbook page number 3. The first question says, write the following sets in the roster form. Okay, the first question is sets of even numbers. So even numbers, for sets we have to first write a capital letter is equal to, even numbers we know it's 2, 4, 6, 8. बट कहाँ तक लिखना है ये नहीं बताया, इसलिए वी आर गोइंग टू पुट अ डॉट 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 एंड क्लोज विद द ब्रैकेट्स टू से दैट माई सेट इज क्लोज्ड. Second, set of even prime numbers. So prime numbers I am representing by capital T, and even prime number is only one number, that is 2. The next one, it says set of negative integers. So integers I am representing by capital I, and we know all the negative integers are on the left side of the number 9. So इसलिए मैं पहले डॉट डॉट डाल रही हूँ, फिर -3, -2 and -1. Fine. The fourth one, it says 7 basic sounds of sargam, that is sur. So sargam है इसलिए I'm taking S, and you know the 7 sargams are sa, re, ga, ma, pa, dha and ni. Okay, then sa is repeated, so I'm not going to write the repeated one. So we are done with question number 1. We'll move to question number 2 now. It says write the following symbolic statement in words. So first one, it is 4/3 belongs to Q. So I will write the answer as 4/3 is an element of set Q. The second one says -2 does not belong to N. That means I will write -2 is not an element of set N. The next one, it says P, curly brackets, P such that is an odd number. So I'll write set P is a set of all P's such that P is an odd number. Okay, so we are done with question number 2. Now let's go on to question number 3. So turn your textbooks to page number 4. It says write any two sets by listing method and rule method. So first I'll be writing listing method, students. Okay, so first example I'm writing is the set of, let us say, all the colors of rainbow. So you know the Vibgyor? Yes, it says violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So this is the listing method form. So how will you write this in rule method या roster method? So you will write A is equal to X such that X is color of rainbow. ठीक है, इसी सेट को मैंने सेट रूल मेथड में लिखा है. सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इज, let us say set B. Okay, so in B I'm writing all the things that are present in your geometry compass box. So let us say scale, rubber,
protractor. I hope you all know these. Yes, you will use it daily for your exams and obviously for your maths. So और क्या होता है? Pencil, pen, yes, etc. So what I will write it in rule method? X such that X is a tool of geometry box. Is this easy now? Yes. Okay, coming to question number 4. Write the sets using listing method. Okay, so coming to the listing method, the first one, it says all months in the Indian solar year. Okay, so I have to write set A is equal to पहला महीना आता है चैत्र, देन वैशाख, देन ज्येष्ठ, then Ashad, yes, you can say Shravana, then Bhadrapad, Ashwina, yeah, Ashwin, next Kartik, T-I-K-A, Kartika, then Margashirsh, Posh, Magha and Falgun. So this completes my set. Yes, one of my students is asking for questions. The questions are there in the textbook. Textbook, SSC board, page number 4 I am doing. Yes, so you can follow the questions from them, not wasting my time in writing the questions. I am reading out for you. It's on page number 4. Yes, I am going on to the next question. Letters of the word complement. So again, for the second one, first I will write the set, that is in capital B, and then complement comes C, O, M, P, L, E, N, T. Students, we don't have to repeat the letters. Okay, so जो repeated है वो हम नहीं लिखेंगे. Next on, we go into the question number 3. Set of human sensory organs. So set C is set of human sensory organs. That is, we know our sense organs are nose, ears, eyes, tongue and skin. Okay, going on to the next, set of prime numbers from 1 to 20. So what are the set of prime numbers 1 to 20? The numbers who are not divisible in any other table. So they are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. We are not going to go beyond this because it says up to 20. Okay, fine. Next question, name the continents of the world. So I am taking it as set E. Continents of the world are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Okay,
So with this we finished question number 4. Going on to question number 5. Question number 5 says write the following sets using rule method. Okay, so here set A says 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. तो इसका आंसर क्या होगा? I know this is 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20, this is 5, 6, 7 and the squares are going on, right? So I can write the answer as x such that x is belongs to the square of natural numbers, because 1 to 10 are natural numbers, right? Such that n belongs to natural numbers and n is equal or less than 10, because यहाँ पे 11 का नहीं आया है. Going on to the second question. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Now here I can see this is the table of 6. So how will I write this? X such that x is multiple of 6 natural number. So n belongs to n, that is capital N is natural number. And कहाँ तक है 6 का टेबल? 8 तक है ना. So it's less than 9, or you can also write equal or less than 8. Third one, C S M I L E. Okay, so here we can say this is the letter smile. So instead of x now I am taking y. Y such that y is a letter in the word smile. Yes. Next, fourth one. I know this is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So this is the days of week. So what will I write? चलो अभी Z लेते. Z such that Z is a day of the week. Okay. Then last, X is equal to AET. Yes students, so I can write this as, again I am taking y such that is a letter of word. Now what word is formed? You can write eat, you can write ate, or you can even write tea. Yes, so from these 3 letters all this can be found. So this finishes my practice set 1.1. Fine. We are going on to the next practice set 1.2. Before going there, we'll just go through the textbook. I am still on page number 4. यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दिए हैं which you should know before starting with practice set 1.2. Yes, one of my friends, Ayush Gaming, is saying, ma'am, I have a question. Yes, please put forward with your question. Fine. Singleton set. Any set who has only one single element will be called as a singleton set. Okay. Empty set or none set. Any set which does not have any element. जो नंबर्स होते हैं ना सेट के अंदर, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं. तो एक भी एलिमेंट नहीं है इसलिए वो एम्प्टी है. ठीक है. नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट. ऐसे सेट्स जिसके नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं.
और इनफाइनाइट सेट्स, ऐसे सेट्स जिसके नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, और उसको हम ऐसे डॉट 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 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. नाउ टर्न योर टेक्स्ट बुक्स टू पेज नंबर 6. I have practice set 1.2. Okay, question number 1. Decide which of the following sets are equal sets and which are not. Justify your answer. Fine. So here two sets are given to me. A, x, 3x minus 1 is equals to 2. Then B, x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite number. ठीक है. And C is given x such that x belongs to n and x is less than 2. More than 2. So let us start with the solution. Now here I am going to do some rough work. For A set it says 3x minus 1 is equals to 2. So I am going to solve this equation. So 3x is equals to 2. ये minus 1 इधर जाके हो जाएगा plus 1. So 3x is equals to 3. x is equals to ये वाला 3 यहाँ आया और ये वाला 3 नीचे आया. So 3 1 जा x आया 1. Okay. So my A set contains x is equals to 1. Or you can say A set just have one element in it. ठीक है. Now coming for the B, what it says, B is a natural number but x is neither prime number nor a composite number. So again B has only one which is neither prime nor composite. So A and B are equal sets. Let's talk about C now. C belongs to natural number. Okay, so natural number we know starts from 1 and x is less than 2. So again x will be 1. So all three sets are equal. If I number it as 1, 2, 3 and I say from 1, 2 and 3 set A is equal to set B is equal to set C. Or you can say all the sets are equal and they have only one element in common, that is 1. Or you can also say all the three are singleton sets. Okay, coming on to question number 2. I hope you understood this question. Decide whether set A and set B are equal sets. Give reason for your answer. Now A, it says even prime number. Now this is the question I am writing, okay? And B, x 7x minus 1 is equals to 30. So यहाँ पे सिर्फ 2 sets are given to me. So let me see. A is an even prime number. ये अभी हमने first 1.1 में भी discuss किया है कि only 2 is the even prime number. So A set contains only one element. Now what about set B? Again we are going to do a set of rough work here. For set B it says 7x minus 1 is equals to 13. So 7x is equals to 13 ऐसे ही लिख रही हो. ये minus 1 इधर जाके हो जाएगा plus 1. तो 7x हो जाएगा 14. x will be 14. 7 आएगा नीचे. 7 1 जा 7 2 जा x आया 2. So here you can say B set also contains element 2. So again if I mark this as 1 and this as 2, from 1 and 2 what we get?
both sets A and B are equal sets. Okay, so I hope you have understood question number 2 also. Going on to question number 3. Which of the following sets are empty sets? Okay, and why? इसमें दो नहीं तीन सब क्वेश्चंस है. So we'll start with the first one. A is equal to A such that A is a natural number smaller than 0. ठीक है. सो हमको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होगा. अगर 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा. सो देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है, क्या रीज़न लिखेंगे? देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0. Okay, now second one. Second, it says b is equal to x such that x square is equals to 0. Okay, now 0 का square तो 0 ही है. Yes, so we can say that b has an element 0 in it. So एक element है present, therefore b is not an empty set. Okay, next third, C, x 5x minus 2 is equals to 0 and x belongs to natural number. Fine. So again as I told you, यहाँ पे हमको छोटा सा रफ वर्क करना है. So 5x minus 2 is equals to 0. सो 5x इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा +2. सो x विल बी 2 और 5 आएगा नीचे. सो हमको क्या आंसर आ रहा है? 2/5. सो C हैज़ एन एलिमेंट 2/5 in it. So again this is not a natural number. Yes, fraction is not a natural number. Therefore C is an empty set. Okay, so here finishes with question number 3. Now turn your page of the textbook to page 7. Question number 4. Write with reasons which of the following sets are finite and which are infinite. Okay, so this is an easy one. इसके अंदर 7 सब questions है. So let's start quickly. X such that x is less than 10 and x is a natural number. यस, सो लेस देन 10 है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं. सो ये कैसा सेट है? यस, इट इज़ अ फाइनाइट सेट. सेकेंड वन, बी, y such that y is less than -1 and y is an integer. अब हमको पता है इंटीजर्स जो है वो -1 से स्टार्ट हो गए, है ना, और ये दिस विल गो ऑन एंड वी डोंट नो कहाँ तक है. सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. ओके, C is set of students of class 9 from your school. Okay, so you know how many students are there in your class, you can count them. So this is a finite set. Next, fourth one, set of people from your village. Okay, again you can count the number of people in your village, so it is a finite set.
Next, set of apparatus in laboratory. Yes, again everyone has a note कि कितने apparatus है laboratory में, उसका एक register होता है. So again we know it. So it is a finite set. Going on to the next question, number 6. Question number 6. Set of whole numbers. Whole number, you know, whole starts with 0. Yes, कहाँ तक end होता है नहीं बताया है. So it is an infinite set. Set of rational numbers, 7th one. Again, कहाँ तक है नहीं बताया है, इसलिए this is also an infinite set. So this finishes my practice set 1.2. I hope you don't have any doubts still here. If you have any doubt, you can put it on the chat. Okay, going on to practice set 1.3, which is on textbook page number 11. Now, to understand 1.3 again, you have some छोटे points to be noted, so that I will be teaching you as and when the question comes there. ठीक है? So, to start with the first question, if A is A, B, C, D, E, B is C, D, E, F, C is B, D, and D is A, E. Okay, then which of the following statements are true and which are false? ठीक है, the first one it says C, ये ऐसे लिख के नीचे लाइन मारेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं सबसेट ऑफ B. ठीक है, सो हम C सेट और B सेट देखेंगे. अब देखो C सेट में BD है और B सेट में CDEF है, तो B सेट जो है वो C से बड़ा है, सो B cannot be a subset. So this statement is false. और जितने भी एलिमेंट्स B में हैं वो C में नहीं हैं, so C cannot be a subset of B. Going on to the second, A subset D. Again go back. A देखो A B C D E और D में क्या है A और E. So D can be subset of A, but A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो D में प्रेजेंट नहीं है, so ये वाला भी कैसा है false. Third one, D is a subset of B. अब D देखो D में A E है और B में इतने सारे हैं, so all the elements of B are not present in D. So again this is also false. Fourth, D is a subset of A. अभी देखो D में A और E है. ओके, पहला वाला नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए और दूसरा वाला नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए. सो पहला वाले नंबर में अपने पास 2 ही एलिमेंट्स है और बड़े वाले में बहुत सारे हैं, मतलब सेकंड वाला बड़ा है. और D में क्या है A और E, और A और E A में प्रेजेंट है. यस, सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, B is a subset of A.
अब ए और बी देखो, बी छोटा है, यस, लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है? लेट अस चेक। सी है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं है। सो व्हाट वी विल से, इट इज फॉल्स। सारे एलिमेंट्स रहना ज़रूरी है। नाउ सी इज अ सबसेट ऑफ ए। कम बैक, सी देखो, सी में सी छोटा है, ए बड़ा है, और सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए में प्रेजेंट है क्या? यस, बी है, डी है। सो दिस इज ट्रू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Yes? Fine. Going on to question number 2. Question number 2 says, take a set of natural numbers from 1 to 20 as universal set. ओके स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें हमारे बाकी के सारे सबसेट्स होते हैं. ठीक है, सो दिस, ये सेट सबसे बड़ा वाला सेट होता है, और हर सम के लिए ये जो यूनिवर्सल सेट होता है वो अलग होता है. सो यू हैव टू रीड केयरफुली, यू हैव टू मेक द यूनिवर्सल सेट, एंड अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू मेक द अदर स्मॉल सेट्स. Fine. So I think I will require a new page for this question. So I'll turn the page. So you'll take a universal set and 1 to 20. So this is my universal set. अब वो हमको दो सेट्स दिए हैं. x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 15. सो x क्या होगा अपना भाई? 7 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक नहीं जाना है बिकॉज अपना x 15 से छोटा है. सो ये अपना x सेट होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमको एक स्केल और पेंसिल लगेगी, और हमको हमेशा रेक्टेंगल बनाना है. ठीक है, सो एक रेक्टेंगल बन गया है. फाइन. और यहाँ पे हमको U रिप्रेजेंट करना है. किसके? रेक्टेंगल के बाहर, कैपिटल U. और हमको एक छोटा सा सर्कल बनाना है विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट आर सेट X. सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस X. अब बच्चों देखो, जो भी एलिमेंट्स है X में, ओके, वो हमको X सेट के अंदर लिखना है. क्या क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. अब जितने भी नंबर्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट में, वो सब हमको बाहर लिखना है. सो हमको 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इसके अलावा बाकी के सारे नंबर्स. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19 or 20. So this is how my Venn diagram for this question is complete. Did you all understand? Yes? Okay. Now going on to the next sub question. Question 2 पे ही हूँ मैं. ठीक है, फिर से मैं यूनिवर्सल सेट लिख रही हूँ, दैट इज़ 1 to 20. Okay, now the next set is y set. It says y such that y belongs to natural number and it is a prime number from 1 to 20. So चलो बच्चों, प्राइम नंबर्स बताओ क्या क्या है. प्राइम नंबर्स 2, 3, 5,
7, वेरी गुड, 11, 13, 17, 19. ओके, सब हमको वेन डायग्राम बनाना है. सो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे? वेरी गुड, रेक्टेंगल बनाएंगे. आई होप यू आर मेकिंग इट विद मी. ओके, और रेक्टेंगल बनाने के साथ वी आर गोइंग टू राइट अ कैपिटल यू आउटसाइड एंड देन यू आर गोइंग टू मेक अ सर्कल एंड राइट y इनसाइड. अब y के अंदर जो नंबर्स हैं हमको y के अंदर लिखना है. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. बचे हुए नंबर्स देखो, 2, 3, 5, 7, सॉरी 9 तो नहीं था, आई एम सॉरी, 9 3 के टेबल में जाता है. 11, 13, 17 और 19. अब बचे हुए नंबर्स मुझे बाहर लिखने हैं. दैट इज़ 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 and 20. So this completes my second Venn diagram. So this finishes our question number 2. Going on to question number 3. What does question number 3 says? Question number 3 says, again मैंने जैसे कहा था, हर सेट का यूनिवर्सल सेट अलग होता है. सो इसका यूनिवर्सल सेट देखो क्या है. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसमें हमको अनदर सेट दिया है P 1, 3, 7 और 10. अब इसमें हमको दो सब क्वेश्चंस दिए हैं. एक, शो दैट U, P एंड P डैश पढ़ते हैं इसको. P के ऊपर ये डैश है ना, तो इसको हम P डैश पढ़ते हैं या P कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं. शो देम बाय वेन डायग्राम. फाइन. सो P डैश रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? P U तो है हमारे पास, P भी है, तो P डैश सेट बनाएंगे. अब P डैश वो सेट होता है जिसमें P वाले एलिमेंट्स नहीं हैं. सो हम क्या करेंगे? यूनिवर्स सेट में से P वाले एलिमेंट्स क्रॉस करेंगे. 1, 3, 7 और 10. अब कौन से एलिमेंट्स बचे? 2 बचा, 8 बचा, 9, 11 और 12. सो दिस इज़ माई P डैश सेट. ठीक है, अब इसको हमको बनाना है वेन डायग्राम में. सो you remember, again we have to draw a rectangle और हम रेक्टेंगल के बाहर कैपिटल U लिखने वाले हैं और एक सर्कल बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट माय P सेट. P सेट में क्या क्या है? 1, 3, 7 और 10, राइट. तो ये मैंने P में लिख दिया और P डैश में मेरे रिमेनिंग है, इसलिए मैं P डैश बाहर लिख रही हूँ. और इसमें क्या क्या है? 2, 8, 9, 11, 12. So this completes my Venn diagram for the first question. I hope you are finding it easy till here. Yes, if you have any questions, you can put it on the chat. Going on to question number 2 of question number 3. It says verify P dash dash is equal to P. So to verify this, you have the universal set 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, right? So P dash P भी हमने निकाला है. P क्या था? मतलब दिया है क्वेश्चन में 1, 3, 7, 10. तो इसको छोड़ के जो एलिमेंट्स होंगे वो P डैश में होंगे, राइट. सो P डैश हमने कहा था इट इज़ 2, 8, 9, 11 एंड 12. सो
पी डैश डबल डैश क्या होगा? अगेन पी डैश डबल डैश वो होगा जो पी डैश में नहीं है. सो अगेन इफ आई कट कैंसल आउट पी डैश और यूनिवर्सल सेट, हमको ये दोनों सेट्स देखने हैं. 2 कैंसिल करो, 8 कैंसिल करो, 9 करो, 11 करो और 12 करो. तो क्या बचता है बच्चों? यस, यू गेट द सेम एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सेट P. So U intersection P dash gives me elements 1, 3, 7 and 10. I'm marking this as 1. And we already know that P set has these elements, so I'm marking it as 2 and this is given to us. Therefore, from 1 and 2 you have P dash dash is equal to P. You can see दोनों के भी elements same है. So hence proved. So this finishes question number 3. Going on to question number 4. A is 1, 3, 2, 7. Now write 3 subsets of A. Oh, so this is very easy. ये बड़ा रखना है, बाकी जितने भी सबसेट्स आपको बनाने हैं सब छोटे छोटे बनाओ. सो यू कैन राइट 1 3, यू कैन राइट 1 2, you can write 1 7, you can write 3 7, you can write 2 7, you can even write a single 1. ओके, एंड यू कैन मेक मैनी मैनी. हमको तो 3 ही बनाने के लिए बोले थे, हमने बहुत सारे बना लिए. सो यू कैन गो ऑन. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में अगेन वी हैव 2 सब क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, राइट द सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग. नाउ सबसेट रिलेशनशिप क्या होती है? Let me read the question first. P is a set of residents in Pune. M is the set of residents in Madhya Pradesh. I is the set of residents in Indore. B is a set of residents in India. H is the set of residents in Maharashtra. Okay, so you have to write the subsets or the relationships, right? So first thing that I'm going to write is P is a subset of H. P क्या है? Pune, right? So Pune is in Maharashtra. So P is a subset of H. Second, I'm going to write P is a subset of B because Pune is also a residence of India, है ना. H महाराष्ट्र है और B इंडिया है. सो और P पुणे है. ओके, सो पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे इंडिया में भी आता है. सो ये दोनों हो गया. देन I इज़ अ सबसेट ऑफ M. I इज़ इंदौर और M इज़ मध्य प्रदेश. So I is a subset of M. Then I is also a subset of B because Indore India में भी है भाई. So I is a subset of B. Next, M is a subset of B. मध्य प्रदेश भी इंडिया में है. And yes, अपना महाराष्ट्र is also in India. So all these are subsets of B. So we finished with the first subset question. Second says which set of the above is the universal set? Yes, universal set will be set B because ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. हमने सारे B के साथ मैच किए हैं मैक्सिमम, इसलिए अपना यूनिवर्सल सेट होगा B. Coming on to question number 6.
Which of the following sets could be the universal set for the given set below? ओके, इसमें भी सब क्वेश्चंस है. फर्स्ट वाला है ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, बी set of multiples of 7, C set of multiples of 12. ओके, तब इनमें नंबर्स दिए हैं, मतलब 5 का टेबल समझ लो, 7 का, 12 का, ऐसे ये सारे टेबल्स है. तो इनके यूनिवर्सल सेट क्या हो गए? या तो आप नेचुरल नंबर्स ले लो, natural number is starts from 1 2 3 और you know till the end. या आप whole numbers भी ले सकते हो which 0 से start होता है, या आप integers ले सकते हो. integers में -3 -2 -1 0 और आगे तक भी जाते हैं. ओके, so all this can be the universal sets for A, B and C. Understood? Okay, coming to question number 2. Question number 2 says P is a set of integer of 4. Set of integer which are multiples of 4. T is set of all even square numbers. ठीक है. अगेन इनके भी आप नेचुरल नंबर्स ले सकते हो, होल नंबर्स ले सकते हो, या आप इंटीजर्स भी ले सकते हो. सो एनी वन कैन बी, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, द सेट यूनिवर्सल सेट फॉर पी एंड क्यू. यहाँ पे ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ पी जो है मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 का टेबल है और ये इवन स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर है. तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आप कोई भी नंबर लो, इट इज़ गोइंग टू फॉल इन दिस 3 कैटेगरीज. So the universal set for all the two sets above sets P and T can be natural number, whole number or integers. So I hope this question is also understood. Going on to the last question. Let all the students of the class is a universal set. Okay. Let A be the set who scores 50% mark. So A is a set of students who secure 50% or more in maths. Then write complement of A. Universal set है total number of students. Total number of students of your class. Let us say 9 class. ठीक है, fine. So if A, we don't know the exact number right here, so A intersection B, मतलब सब ऐसे समझो कि सारे बच्चे पास हुए हैं और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको 50% से कम मार्क्स नहीं मिले हैं. सो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा नल सेट. ठीक है, तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है बिकॉज उसने दिया ही नहीं है कि कोई बच्चा फेल हुआ है. सो दिस शुड बी द आंसर. ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट. सो दिस इज हाउ वी फिनिश our practice set 1.3. I'm going to try to finish maximum चीज़ें in this 1 hour. So going on to
page number of your textbook 16, that is our next practice set. So textbook page 16, practice set 1.4. So if you look at bit difficult, but believe me, this is very easy if you understand. फाइन. सो जैसे मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट के पहले भी बोला था कि जैसे जैसे सम्स आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी. इसके पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए. ठीक है, जैसे यूनियन सेट. यूनियन मतलब दोनों को ज्वाइन करके, जो ए और बी सेट हो गए दोनों को मिला के यूनियन बने. ठीक है. और इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे. ठीक है. सो लेट अस with these two things understand the first set question. Here इसको हम पढ़ेंगे. number of elements in A is 15 and number of elements in A union B is 29 and number of elements in A intersection B is 7. And the question is how many elements are present in B. So for this आपको एक फॉर्मूला याद करना है. जो ये फॉर्मूला है, number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. याद रखो पहले यूनियन लिखना है और लास्ट में इंटरसेक्शन लिखना है. ठीक है. अब A यूनियन B में कितने हैं? 29. A में कितने हैं? 15. B में आपको फाइंड करना है तो वो वैसे ही लिखेंगे. और इंटरसेक्शन में दिया है 7. ठीक है. तो पहले 29 और 15 और 7 को हम साथ में लिखते हैं. तो 15 में से 7 गए तो 8 बचे. ठीक है. अब 29 को इस साइड 8 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 29 में से 8 गए तो हो जाएगा 21. Therefore number of elements in B is 21. See, it was so easy. Fine. अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमको दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक मेथड है ये फॉर्मूला वाला मेथड और दूसरा मेथड है वेन डायग्राम वाला मेथड. सो आई ट्राई टू शो बोथ द मेथड्स. यू कैन डू एनी वन विच एवर इज ईजियर फॉर यू. ठीक है. So first let us read the question and understand what is given to us in the question. ठीक है. In a hostel there are 125 students. So maximum उसने हमको universal set का नंबर बता दिया है, that is 125. So जो सबसे बड़ा और टोटल नंबर होता है हम उसको universal set लेते हैं. ठीक है. Out of which 80 drink tea. तो मैं टी वाले बच्चों को A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसके लिए मैं उसको 80 लिख रही हूँ. ठीक है. 60 ड्रिंक कॉफ़ी. सो कॉफ़ी वाले बच्चे मैं बी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वहाँ पे मैं उसको लिख रही हूँ कॉफ़ी. एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी. सो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भी पीते हैं जब मर्ज़ी, कुछ चाय पीते हैं कुछ कॉफ़ी पीते हैं. तो ऐसे बच्चे कितने हैं? 20. हमारा फॉर्मूला आपको याद है. फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा है फॉर्मूला याद रखना है. ए यूनियन बी. पहले यूनियन करो, फिर ए लिखो, फिर बी लिखो और फिर ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो यूनियन में कितने हैं हमें नहीं पता, हमको फाइंड करना है. नंबर ऑफ ए में कितने हैं? 80. बी में है 60 और इंटरसेक्शन में हमको मिले 20. सो 8 + 6 कितना होता है? 140 माइनस 20 तो आया 120. सो हमारे ए यूनियन बी हमको आ गया, दैट इज 20. ठीक है. फाइन. नाउ हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट
माइनस ये जो हमको यूनियन मिला है, दैट इज़ 125 माइनस 20. सो 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, अच्छे बच्चे हैं. सो दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ 5. सो वॉजंट इट ईजी? यस, fine. Now I'll show you the next, that is the Venn diagram wala method. That is my method 2 to solve the same question. Okay, आप इसको या द पहले वाले जो भी आपको इजी लग रहा है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो इसके लिए पहले मैं बॉक्स बना लेती हूँ. यू नो हमको वेन डायग्राम के लिए बॉक्स बनाना पड़ता है. So this is my universal set, okay, and this is, let us say, my set A and this is my set B. A में कितना बोला था हमने? 80. B में हमने कहा था 60 और इंटरसेक्शन दोनों में 20. सो बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ से भी 20 माइनस करना है, यहाँ से भी 20 माइनस करना है. तो ये हमको आया 60, ये हमको आया 40. So number of elements in B 60 plus 20 plus 40. तीनों नंबर्स को ऐड करो, आ गया 120. यस, और फिर यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B विल बी 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 5. तो इस तरह से भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा, दैट इज़ 5. सो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना कि चाय पीते हैं ना कि कॉफ़ी पीते हैं. ओके, सो आई थिंक 1 आवर ख़त्म होने आया है. सो आई नीड टू स्टॉप हियर and then we will continue after a break and will continue after some time. Okay, I hope you enjoyed the session, I hope you understood the session. Very soon I'll take another session and continue and try to end up this chapter and start with the new chapter. Thank you for joining me.